Howdy everyone, this is Astha Joshi and you're watching Learning Never Stops, and today we're going to learn a song which was requested by Swati, and she requested this beautiful song which is O Meri Laila from the movie Laila Majnu. Now I had not known of this movie, I was not known of this song, but when I heard it I was like, wow, it was an instant connect. And this song is, it sounds as if it's gonna be challenging, but it's not. It's very simple. Okay, it's very simple, very easy. These are the chords we're going to use here. This is a strumming pattern. Now coming to the chords, the G7 chord can be replaced by G at the places where I'm going to use it. However, it sounds much more crisp when you use G7. Okay, and it's not even difficult to play. Okay, so I would really appreciate if you play it with G7. And the strumming patterns, I've used two of them. In the more stronger part of the song, I've used some chucking and I've brought in some changes. And however, if you want, you can play the whole song in the same strumming pattern. It doesn't matter that much. But when you use the other pattern, so it brings a nice transition. So yeah, that's all. So if you already know how to play them, then you can skip, otherwise here we go. 1, 2, 3, let's Okay, now everyone, coming to the chords. The chords are very easy. The first chord is the C chord, which is the first string of your third fret, C. Then comes A minor. Just take your middle finger, put it on the fourth string of your second fret. This becomes A minor. Don't lose your A minor, keep it intact. Just take your index finger, put it on the second string of your first fret, becomes F. Then comes G. G is very easy, it is a downward facing triangle. Okay, you take your index finger, you'll put on the third string, and you take your middle finger, you put it on the first string of your second fret, and then take your ring finger and put it right in between of them on the next fret, which is on the second string of your third fret. This becomes G. Then the next chord you have is exactly the opposite of G. This chord is called as a G7. Now this G was a downward facing triangle, G7 is an upward facing triangle. So upward facing triangle, you take your index finger, put it on the second string of your first fret, then you take your middle finger and ring finger on the third and the first string respectively. This becomes G7. Okay, now coming to the strumming part. For strumming, I use very easy strumming pattern here. Both the strumming pattern is really easy. Okay, now for the first strumming pattern, I first change my hand position. Usually I use my index finger, most of the time, or all my fingers. But this part of the song, for this song, I use a heart-shaped fingers. I use my index finger and my thumb, and I do them like this, very easy, and then I go down, up, 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 down, down, up, 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 down, up. ये जो पहाड़ी गाने होते हैं ना, क्योंकि ये शायद कश्मीर का लग रहा था मुझे मूवी एंड ऑल, सो ये जो पहाड़ी, जैसे मैंने गुगु तीन आबासा भी करा था, कुमाऊनी सॉन्ग विच इज़ अगेन अ पहाड़ी सॉन्ग, इनकी एक रिदम होती है, एक बीट होती है, एक पिक्यूलियर बीट होती है. सो यूजुअली वहाँ पे भी मैंने यही स्ट्रमिंग पैटर्न यूज़ किया था, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन. सो दिस इज नथिंग, इट्स जस्ट गोइंग डाउन अप डाउन अप डाउन अप, बट द बीट गोज लाइक दिस, डाउन अप 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 डाउन अप. ओके, सो इट गोज लाइक दिस, na 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 down up down up down up down up. Okay, that's the beat that we're going to catch here. Okay, the next strumming pattern I use here is chuck up chuck up chuck up chuck up chuck up chuck up. Okay, chuck up. Oh meri Laila Laila khao de tu बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है. चक अप चक अप चक अप चक अप. ओके, वही डाउन अप डाउन अप डाउन अप ही है, बस हर डाउन को हमने चक कर दिया है. ओके, ताकि वो एक
एक बेस आए, एक रिदम आए. ऑलराइट, ओके, लेट अस स्टार्ट विद दिस सॉन्ग. इफ़ यू सी आई एम यूजिंग केपो ऑन द थर्ड फ्रेट. आप चाहें तो लगाएं, अदरवाइज अपने रेंज के अनुसार लगाएं, अदरवाइज जस्ट चक इट ऑफ. ओके, चलिए, लेट्स होल्ड सी, स्टार्ट स्ट्रमिंग. Let us start. पत्ता ना रोका, पत्ता चना रोका, जैसे हवाओं में ऐसे भटकता हूँ, दिन रात दिखता हूँ मैं तेरी राहों में. मेरे गुनाहों में, मेरे सवाबों में शामिल तू, very easy. हम ऑलमोस्ट एक सर्कल में चले जा रहे हैं फॉर द मोस्ट ऑफ द पार्ट, विच इज़ फ्रॉम सी टू ए माइनर से एफ, एफ के बाद वापस सी. सिर्फ लास्ट में जाके हम लोग सी पे ना जाके जी पे जाते हैं और वहाँ पे हम लोग टक 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 टक, एंड देन वी स्विच टू द न्यू स्ट्रमिंग पैटर्न विच इज़ टक अप टक अप टक अप टक अप. और वहाँ से हम क्या करेंगे, हम जी पे थे, कुछ पके मैं सबसे वो लैला, मांगू ज़माने से रब से वो लैला, जब से मैं तेरा हूँ तब से तू मेरी लैला. सरको, तू न मेरी तलब है, तू ही तो सब थी, हाँ तू ही तो सब है, जब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला, मेरी लैला, लैला हाँ तो तू है पहला, जब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला, वो मेरी लैला, this whole part goes in a circle. Okay, अब ये पूरा का पूरा part let us just play together. All right, from the beginning, from the very top. 1 2 3, let's go. पत्ता ना रोका, पत्ता चना रोका, जैसे हवाओं में ऐसे भटकता हूँ, दिन रात दिखता हूँ मैं तेरी राहों में. मेरे गुनाहों में, मेरे सवाबों में शामिल तू, भूली अठन्नी सी बचपन के कुर्ते में से मिल तू, जो कुछ पके मैं सबसे वो लैला, मांगू ज़माने से रब से वो लैला, जब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला, तेरी तलब थी हाँ तेरी तलब है, तू ही तो तब थी हाँ तू ही तो अब है, जब से मैं तेरे ना 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 लैला, मेरी लैला, लैला ख्वाब तू है पहला, कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला, मेरी लैला, लैला ख्वाब तू है पहला, कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला. Okay? Okay, now coming to the paragraph of the song, all the paragraph goes exactly the same. I will do one of them with you and then बाकी सब सेम जाएगा. ठीक है. Now यहाँ पे हम लोग G7 यूज़ करेंगे. ठीक है, जो सर्कल होगा वो थोड़ा सा चेंज हो गया है. So we'll start with A minor से F, F से G7 और G7 से फिर C and then again. Okay? So first 2-4 lines के लिए ये है, बाद में डिफरेंट है वो मैं बताती हूँ. ओके, पहले फर्स्ट 2 या फर्स्ट 4 लाइंस करते हैं. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. 1 2 3, लेट्स गो. मांगी थी दुआएं जो, उनका ही असर है, हम साथ हैं ना यहाँ दिखावा है, ना यहाँ दुनियावी जज्बात है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी तू हूरों से ज़्यादा हंसी, यानी दोनों जहानों में तुम सा नहीं. उसके बाद जीत ली है आंखें, देन F में हम दोनों ने ये बाजियाँ, at C and then ना 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 ना. चलो अब इस पार्ट को
शुरू से लेके लास्ट तक बजाते हैं। मांगी थी दुआएं जो, मांगी थी दुआएं जो, उनका ही असर है, हम साथ हैं ना यहाँ दिखावा है, ना यहाँ दुनियावी जज्बात हैं, यहाँ पे भी तू हूरों से ज्यादा हंसी, यानी दोनों जहानों में तुम सा नहीं जीते ले हैं, आखिर में हम दोनों ने ये बाजियां। Okay ji, with that we have come to an end to this particular song. It was an absolute pleasure for me to play this song and to share it with you. And I want to thank you, Swati, for requesting this. Thank you so much for bringing in such fabulous melodies in my life. Thank you all. Thank you so much from the bottom of my heart. With that, I'm ending this tutorial. I hope to see you next time soon with something new. I will see you next time. Until then, adios, amigos and amigas. Keep sending in your requests, okay?